work in your favor only, in your futures only. Cool? Okay, so welcome to your first eco class for the session for the phase one. Okay, so my name is Gyan Ranjan. I have around 13 years of experience and I will be your eco teacher. So earlier there was a there was a ma'am, but she has recently moved to UK and I have taken over in place of her. Okay, so I believe your first session, आपकी पहली class कल थी. It was yesterday, which because of some issue it has not happened. So I will initiate your first class from today. So आज आपकी पहली class होगी. So are you guys aware about the topics which we're gonna cover in your first class? Anyone? No problem. So today is the basic concept and forms of business organization. So that's your first block, and it has 4 different units. So I will just project my screen for the benefit of everyone. Guys, please be vocal. मेरे को बताना if there is an issue, like if I need to switch between English, Hindi, any preferred mode of communication which will be easier for you to understand. अगर आप ये 2 घंटे अच्छे से पढ़ लोगे, believe me, आपका more than half of the work will be done in the class itself. Okay? Yes, sir. Okay, and before we get to the whole module, just want to understand, have you all guys met each other personally, face to face? No, sir. No one? No, No, sir. sir. It's just the online class and you guys are like an online friends, huh? Yeah, sir. Sir, we are strangers. Yes, sir. Correct. So why don't we just switch on our camera? It's absolutely okay. Don't worry about the background कि आप किस environment में बैठे हो, आसपास क्या है. Just switch on your camera. Let's introduce ourselves for the first 5 minutes and let's at least have a face कि हम किससे बात कर रहे हैं, who is in front of us. Lovely, Rohit. Welcome. And we all can unmute ourselves for the first 5 minutes and then we'll all go on mute. Abhishek, Aditya, Manish, Kavir, Jeenat, request everyone to just switch on your camera. Yeah. Let's know each other. It's going to be a full 3 years course with all of us. Jeenat, you need to just unmute yourself. Everyone, like Rohit, Batika, everyone, you need to unmute yourself because you guys will not be able to hear them. Cool. Fair. So, do you guys even know कि what is the batch strength size? आपके batch की total strength कितनी? How many people are there in your batch? सर अभी अगर 30 to लिस्ट के हिसाब से 35. देखा जाए टू अभी यहाँ पे 35 है लिस्ट में, जहाँ तक 240 स्टूडेंट के बैच में थे. Correct. So just imagine the seriousness of people into this batch and this course and Yes, sir. this module. But don't worry. I have just gotten, so we'll pull you all in and we'll give you a good direction because I'm sure, when I was also in your age, जब मैं भी आप लोग के age में था, even I was doing many things which I was not even sure कि मैं कर क्यों रहा and where I am gonna lead. Like future में मैं कहाँ जाऊँगा. ठीक है. So I believe more than, obviously the knowledge of the subject is very important because this will make you understand कि आपको लाइफ में बिजनेस करना है, आपको लाइफ में किसी कंपनी को ज्वाइन करना है, आपको कुछ अपना करना है, किसी के साथ जॉइंट पार्टनरशिप में करना है. सो दिस हैज अ कंप्लीट बिजनेस डोमेन नॉलेज अंडरस्टैंडिंग. दिस कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसे एस्टैब्लिश होगे और पूरा प्रोफेशनल वर्ल्ड किस तरह से एस्टैब्लिश है अक्रॉस आवर होल इकोसिस्टम व्हिच इज देयर इन इंडिया और इन अक्रॉस द ग्लोब. ठीक है. But apart from that, I'm also gonna help you guys to understand कि what
you guys should be doing, आप लोग आगे जाके कैसे अपने आप को grow, turn up करो, so that this course benefits you, just not from the lens of gaining knowledge, but also from the lens of getting more jobs, आगे क्या करना है, how to earn money, how to grow, how to, grow in your career. Cool. Yes, sir. And I will also see if there is some opportunity. I will see if there is some opportunity. Then I will talk to the management, and मैं देखता हूँ कि if you guys can also be called onto the center for a day or so, just for a fun activity. सर एक क्वेश्चन पूछना था, पूछ सकते Yeah, हैं? yeah. Batika, please go ahead. सर ये कह रहे थे कि अभी सुबह 8 बजे से भी एक इको क्लास चल रही थी, अभी ये भी इको क्लास चल रही है, तो उसमें कोई डिफरेंस होगा अगर हम 8 बजे वाली ना लेके हम ये इको क्लास लेते तो? सुबह 8 बजे से कोई इको क्लास तो नहीं थी. सर सेम क्वेश्चन मेरा भी है. अभी मॉर्निंग में किसी ने बताया कि एक मैम ले रही थी मॉर्निंग में 8 सर बजे चल से रही थी, इको इको की क्लास क्लास. चल रही थी फर्स्ट सेमेस्टर की बीसीए की। देन अभी पता चला कि आप भी ले रहे हो, so थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें. Okay, so can you tell me who was the teacher on that class? वंदना वंदना मैम। मैम। Sorry? सर मैम। वंदना मैम। वंदना मैम. Vandana ma'am. हाँ, तो I think maybe she would have not received the information, but most likely I'm gonna replace her now. ठीक है? So she has moved out of the location, and इसी के कारण उनके साथ थोड़ा time match करना tough पड़ रहा है to all of us. Okay? So सर आप हमारी इको के टीचर, राइट? Correct. As of now, yes. ओके सर, गॉट इट सर. Okay? You all are based out of Delhi NCR? यस सर. नो सर। नो सर। Okay. So Bartika, you are from which place? सर प्रयागराज। Oh, people are from distant, huh? यस। Okay, can someone tell me why have you enrolled for this BCA? I just need one answer from someone. Whosoever raised their hand first. There is a tab on the chat. Okay, so Rohit has raised it, so I will give this chance to Rohit then. Rohit, why have you opted for this course BCA? मेरा फ्रेंड जो कर दिया था रेडियो में सेंसर किया था और जब मैंने जॉब करती थी बॉस मैंने अप्लाई कर दिया था पहले वाला तो Okay. सीधा बॉस ने अप्लाई कर दिया Mhm. मैंने ये दिया था मेरे अकाउंट में भी डॉक्टर ने तो जहाँ भी करी मैं ऑपरेशन में करना था बॉस बोले मैं जगह से आ गया और 200 के ग्रुप में भी दिया Okay, था so basically to gain growth in your career. आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ लेना चाहते हो, इसके लिए दिस विल बी अ स्टेपिंग स्टोन, अभी भी है ना? दिस विल एक्ट एज अ स्टेपिंग स्टोन कि आप इसके ऊपर पैर रख के थोड़ा और आगे बढ़ सकते हो और अपने करियर को एक ग्रोथ दे सकते हो, राइट? अच्छा गाइस, एक और चीज है, देखो आप लोग को करियर ग्रोथ करना है या प्रोफेशनल ग्रोथ करना है, मेरे क्लास में एक सिंपल रूल है, यू हैव टू बी वोकल. अपने दिल में अपनी चीजें मत रखना. जब तक बोलोगे नहीं तुम लोग सीखोगे नहीं. ठीक है? नॉलेज हर कोई रट सकता है. मेरे को यहाँ पे रट्टू तोते नहीं चाहिए. मेरे को यहाँ पे वो चाहिए जो उस नॉलेज को यूज कर सके और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. द मोमेंट यू गाइस गोना बी वोकलिस्ट, यू गाइस अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, तुम लोग खुद ब खुद एक वॉरियर बन जाओगे और यू गाइस कैन गेन गुड सक्सेस इन दिस होल कॉर्पोरेट वर्ल्ड. ओके? यस सर। कूल. यस सर. So, आज के लिए आई एम गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉड्यूल. जस्ट लेट मी प्रोजेक्ट माय स्क्रीन. Let me know when it's visible, huh? सर विजिबल है। Okay, thank you. Okay, guys.
सो देखो मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। ये आपको दिख रहा है ना, कलेक्शन इन दिस कम्युनिटी, दिस यस सर। कूल। तो सबसे पहले देखो आपके ये टोटल जो आपका इको का कोर्स है, इको 1 व्हिच वी कॉल इट, ये टोटल 5 ब्लॉक में डिवाइडेड है। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5। ओके। ब्लॉक 1 which is the basic concept and form of business organization. This is further divided into 4 different units. Okay? Nature and scope of business, form of business organization 1, form of business organization 2, and business promotion. 4 units. Okay? Now, अभी आज तो किसी ने कोई इको क्लास फर्स्ट ब्लॉक का किया नहीं है ना? और is there someone from this group who has already done it? नहीं सर, अभी हमारी इको की फर्स्ट क्लास है। Cool. ठीक है, चलो। So let's start with the first unit, which is nature and scope of business. ठीक है। आप लोगों से I will be very transparent. So eco at one point of time is very important because आपको पूरा, जैसे for example अभी मेरे को रोहित ने बताया था कि why he has joined BCA and many other people have would also, कि उनको ग्रोथ चाहिए। बट मेनी पीपल डजंट नो यार, मैं कंपनी में काम करता हूँ ना, तो वो कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सेटअप क्यों हुआ है, किस तरीके के लोग हैं, क्यों वो कंपनी फॉर्म में आया, क्या क्या तरह का इकोसिस्टम है मेरे पास। और अगर जिस दिन आप ये समझ जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास स्कोप कितना है, वेयर ऑल यू कैन गो, आपकी स्किल्स किस पर्टिकुलर बिजनेस वर्टिकल के अंदर सबसे अच्छी अलाइंड है और आप उसको सबसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो। हम लोग हमेशा जिंदगी में यही बोलते रहते हैं कि यार काम कर रहे हैं बट काम में मजा नहीं आता है, काम इज जस्ट अ वर्क विच आई एम डूइंग इट जस्ट टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं बट मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट और मेरी स्किल दोनों जो है ना डजंट टॉक टू ईच अदर। मेरा इंटरेस्ट कुछ और है बट मेरी स्किल जो मैं डेवलप कर रहा हूँ वो कुछ और है। और जिस दिन ये दोनों मैच कर जाता है और मैं अपने को उस वर्टिकल में प्लेस कर लेता हूँ, दैट इज द टाइम आई ट्राई टू चेज एक्सीलेंस। मैं उस समय एक्सीलेंस के पीछे पढ़ने शुरू हो जाता हूँ, एंड दैट इज व्हेन पीपल स्टार्ट लविंग देयर जॉब। सो इको में थोड़ा सा अटेंशन लो। अगर आप अकेले पढ़ोगे मे बी यू विल फील कि यार आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली, पूरा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। बट अगर आप ये सेशन थोड़े अच्छे से समझ लोगे, आई विल गिव यू अ कंप्लीट नैरेटिव, ताकि यू विल गेट अ कंप्लीट हैंड होल्ड कि अच्छा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ था, एंड इस स्ट्रक्चर में दिस इज हाउ आई नीड टू स्टडी एंड देन डिलीवर द रिजल्ट्स फॉर माई सेल्फ। ओके, just give me a second. I'm just gonna fold up a pen and a paper for myself. Yeah. Sir, actually, I have a doubt. Yeah, just give me a minute. Yeah, sorry. Yeah, who had a doubt? Sir, actually, I have a doubt. Like different study centers की different classes होती हैं. Different classes as in like curriculum की बात कर रहे हो आप? नो सर, जैसे अभी मीट पर जैसे मैंने बताया मतलब कि अभी वंदना मैम क्लास ले रही थी इको की, और अभी आप ले रहे हो, तो आप किसी और स्टडी सेंटर से और वो किसी और स्टडी सेंटर से हैं। So to be very honest, देखो it's a big universe, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं. So I will have to actually reach out to my center in order to understand कि वो किस बैच की क्लास ले रही थी. Can you just mute, Sony? Because the voice is echoing. Yeah, thank you. So I will just reach out to the class and then Sumit, you also need to go on mute. Yeah?
Yeah, thanks. So मैं एक बार reach out कर लूंगा and I will just have an understanding कि where is Vandana ma'am came into the picture and वो किस बैच का क्लास ले रही है. So I'm sure तुम लोगों ने अपना एक WhatsApp ग्रुप बनाया होगा. Someone from your team can note down or reach out to me and मैं उनसे अपना नंबर एक से शेयर कर लूंगा and then I will probably give out the information and then that guy can circulate the information on that chat group. आप WhatsApp ग्रुप में कर सकते हो so that it's a proper knowledge dissemination to everyone and everyone will be on the same page. Okay, so I will give you the clarity of it. So I will just Okay. take somebody's phone number by the end of this call. Maybe Rohit, you can share your number with me in the chat box. Okay, and then I will give you the information and then that you can circulate within the whole channel. Okay, before we start with the class, I would request every student to please mark their attendance in the chat box. I hope you guys know the format and all. Okay, so you just need to write down your name, your enrollment number, okay, and just hold on for a second guys before writing. आप लोग किसी और क्लास के लिए अटेंडेंस मार्क करते हो तो हैव यू गाइस एंटरिंग समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम नेम एंड एनरोलमेंट नंबर? यस सर, व्हाट ऑल? वहाँ पे एंट्री हो रखी होती है हमारी। सॉरी, वहाँ पे सर हमारी एंट्री कर रखी होती है और डेली हमारी उसी हिसाब से अटेंडेंस लगती है। आपकी एक एंट्री होती है? नो सर, अदर देन नेम और एनरोलमेंट नंबर के अलावा कुछ और नहीं जाता है। यस सर, ये इसी पर लिखा जाता है। ठीक है, सो जस्ट हाँ करेक्ट, जैसे बरखा ने अभी लिखा है इस तरह के फॉर्मेट में जस्ट नेम एंड एनरोलमेंट नंबर सर आपकी आवाज स्लो आ रही है। ओके, विल बी मोर. I am a little bit under the weather, yeah, so just bear with me. Okay, so coming back to your schedule. So आपका कुछ इको का सुनाई क्लास नहीं दे कल रहा सर। सर किसी का माइक ऑन है। आपका नेटवर्क स्लो होगा इसलिए आवाज नहीं सुनाई दे रही आपको। बाकियों को सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। तो जिसको नहीं दे रहा है, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप एक बार लॉग आउट करके वापस से ज्वाइन करने की कोशिश करो. मे बी दैट्स अ नेटवर्क इशू एंड मे बी बाय डूइंग दिस योर बैंडविड्थ विल इंक्रीज एंड ऑल. Okay. Okay, cool. So coming to your unit 1 of block 1, which is called the nature and scope of business. तो आप यहाँ देखोगे इस पूरे यूनिट में there's a basic introduction of your complete nature and what is the scope of business. Okay, so coming into it, so majorly you need to start ki what is a human activity. Okay, so all of us participate in various kinds of work from time to time, to go to bed in the morning, then we sleep in the night, फिर हम लोग दिन में काम करने जाते हैं, we do brush, we go to the kitchen to make food, so we are doing a lot of activities throughout the day. हम पूरे दिन में बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, starting from we are waking up in the morning from the bed, brushing our teeth, kitchen में खाना खाना, going to office, going to market, enjoying with friends, you know, social media, chatting, social browser, shorts, reels देख रहे हैं, a lot of things, TV देख रहे हैं, उसके बाद a lot of other household activity कर रहे हैं, उसके बाद सो रहे हैं. तो all these things are summing up into the activities and these are called the human activities which we do. Now basically हम human activity को दो चीजों में divide करते हैं. One which we call it which is non-economic and one which is economic. So एक activity जिससे हमें economic means हमें कुछ पैसे या फिर कुछ मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर इनकम हो रही है,
और दूसरा विच आर लाइक नॉन इकोनॉमिक इन नेचर. सो नॉन इकोनॉमिक, फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह ब्रश कर रहा हूँ, सो दिस इज अ नॉन इकोनॉमिक. मैं ब्रेकफास्ट क्रिएट कर रहा हूँ अपना, दिस इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, सर कूल. सो मेरे को प्लीज स्टॉप मी इन केस आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट और कुछ और आपको क्लैरिटी चाहिए होगी कहीं पे भी. तो आप ये टेबल देखो, फिगर 1.1. सो ह्यूमन एक्टिविटी इनटू टू पार्ट्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. Now non-economic, I told you, like these are like not that monetary driven. So इसमें monetary driven activities नहीं होती, non-monetary driven activities होती है. And economic is all about monetary driven activity. So since we are sitting in the eco class, so we will talk about all the economic activities across the human activities. Now economic activity में basically there are three different buckets under which economic activities can be divided. First one, what we call it as a business. Second is a profession, and third one is an employment. I hope everyone is paying attention, guys, and keep on adding the attendance on the chat box. Just don't miss it. Yes, sir. सर Okay. So business क्या होता है? So any activity which is carried primarily with the objective of earning profit. ठीक है, मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूं विद एन ऑब्जेक्टिव कि मेरे को प्रॉफिट हो, उसको आप बिजनेस एक्टिविटी कहते हो. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके घर के बगल में किराना शॉप, दैट हैज बीन क्रिएटेड विद एन ऑब्जेक्टिव कि यार उससे मेरे को और जो भी किराना शॉपकीपर है उसको कुछ प्रॉफिट आएगा. ठीक है, इट्स कॉल्ड अ बिजनेस. ठीक है, any person who is engaged in a firm with a motive of creating profit is called a business. ठीक है, now the second part, what we call it a profession. Profession क्या होता है हमारा, कि कोई भी एक्टिविटी जिसमें हम engage होते हैं with a personalized service or a specialized nature of service which I can devote is called a profession. For example, जो डॉक्टर्स हैं, जो लॉयर्स हो गए, जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए जिसको हम कहते हैं वो हो गए. सो ये सारे एक प्रोफेशन है, क्योंकि ये एक स्किल सेट, एक स्पेसिफिक स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे. और आप डॉक्टर्स को देखते हो कि डॉक्टर्स अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकते हैं, लॉयर्स अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं. तो ये स्किल सेट वो स्किल सेट है जिसके थ्रू आप अपना एक इंडिपेंडेंट बिजनेस क्रिएट कर सकते हो. इसको आप प्रोफेशन कहते हो. ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एन एम्प्लॉयमेंट. नाउ एम्प्लॉयमेंट इज एन एनी एक्टिविटी which aligned a person to an organization under a act of a lot of clause, terms and conditions. So for example, आप किसी कंपनी के लिए जब कोई जॉब करते हो तो आप उसके एम्प्लॉयमेंट क्लॉज को साइन करते हो. ठीक है, एंड देन maybe you have a specific skill, or at some employment you don't even need a specific skill, बट आपको उस एंड ऑफ द मंथ में या फिर एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वीकली हो, बाई मंथली हो, मंथली हो, आपको एक पे आउट मिलता है जिसको हम वेजेस कहते हैं. अगर वो एक फिक्स्ड अमाउंट है आपके पास, उसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. ठीक है, तो तीनों का एक आप ध्यान से समझना, एंड दिस इज द बेस ऑफ द होल यूनिट 1. बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस एक ऐसा सेटअप जो आप सेटअप करते हो प्योरली टू मेक प्रॉफिट. प्रॉफिट बनाने के लिए आपने एक सेटअप करा और वो आपका बिजनेस हो गया. प्रोफेशन, आप एक स्पेसिफिक स्किल सेट को यूज करते हो टू ड्राइव अर्निंग फॉर यू. इट कुड बी डॉक्टर, इट कुड बी लॉयर, इट कुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है, ये स्पेसिफिक स्किल सेट जो होते हैं ये जनरली एक
बॉडी ऑफ सर्विसेज के अंदर इनरोल्ड होते हैं, जैसे डॉक्टर्स का हो गया, लॉयर्स का हो गया, सीएस के हो गए, वहां इनरोल्ड होते हैं और उसको देन यू कैन यूज, वो प्रोफेशन होता है। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट, जहां पे आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सर्टेन रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत आप उनके साथ अटैच होते हो, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द 15 days, 7 weeks, 7 days, whatever is the tenure, you get a fixed wages. This is called you are employed. ठीक है, so you can be employed with a government organization, with a private organization, with a factory and all those. So ये आपके 3 major parts होते हैं of a economic activities. Okay. So these are just the essential of feature of business. Just give me a second. Guys, just give me a second. I'm just need to take a screenshot here of this. Okay, cool. Okay, any doubt till here between the economic human activity which we classified between business, profession, and employment? Anyone? No, sir. Thank you No, for sir. confirming. Okay. Hey, Rachita. Yes, Sujata. Who is this?
Okay. Now coming to the first part, we classified economic activity into three parts. First was business, second is profession, third is employment. Now coming to the first one, which is business. So the objective of business could be listed under the broad headings. So the course says the objective of business has been headed under three major broad categories. First is the economic objective. There can be an economic objective for a business. There can be a social objective for a business, and there can be a human objective for a business.